The company pushed the limits of the Mughals when its officials started carrying on a private trade on the side and refused to pay duty. But धीरे धीरे क्या होता है, जो ये ब्रिटिशर्स होते हैं यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो क्या करती है, मुगल्स को ही साइडलाइन करने लगती है, किसी भी तरीके का टैक्स पे करने से मना कर देती है और अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को धीरे धीरे एक्सपेंड करती चली जाती है। 1696, the company built a fort around their settlement. ठीक है, फिर It became फोर्ट क्या होता है, एक किला जो है वो बना लेते हैं अपनी सेटलमेंट के आसपास ताकि वो अपने एरिया को जहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर? evident that the company was not here merely to trade. अब क्या होता है, धीरे धीरे जो है इंडियन रूलर्स को जो है समझ में आने लगता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उनका जो मोटिव है, उनके जो इंटेंशंस है वो ट्रेड से कहीं ज़्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भारत को जो है अपनी कॉलोनी बनाने के लिए इंडिया में अराइव हुए हैं। It was here to fortify and conquer India. 45 मतलब इंडिया को जो है अपना इंडिया को जीतने के लिए और अपनी कॉलोनी, अपना गुलाम बनाने के लिए भारत में आए हैं। Beginning with Bengal. उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, बंगाल से। क्लियर है? The latter half of the 17th century saw the emergence of a new power on India's political horizon. Can you identify this power? Yes, it was the British. In the early 17th century, the British came to India as a small trading company known as the East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे इंडिया में, ठीक है, एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी थी। The company initially established its base in Surat and then gradually started building its base in other parts of the country. ठीक है, सबसे पहले सूरत में ये जो है अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं, मद्रास, बॉम्बे और उसके बाद कलकत्ता में। ठीक है, In this session, we will understand the growth pattern adopted by the East India Company to establish itself as a political power in India in the latter half of the 17th century. In 1651, the East India Company set up its first factory on the banks of the river Hooghly. This was the base from which the company's traders, known at that time as factors, operated. उस समय में ये The अपना factory व्यापार जो had a है warehouse. इन्हीं एस्टेब्लिशमेंट से किया करते थे। हुगली नदी के किनारे जो उन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए थे, फैक्ट्री, वेयर हाउसेस बनाए थे। इनिशियली ये जो फैक्ट्री थी क्या थी, एक वेयर हाउस था, स्टोरेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि विदेश में जो सामान भेजा जाता था उन सामान को जो है स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस बनाए गए थे। Where goods for export were stored. And there were also the offices from where the company officials conducted business. The new laws passed in Britain in 1670 further emboldened the company officials in their expansion strategies in India. These laws allowed them autonomous acquisition of territory, right to mint money, right to command fortresses and troops, declare war and peace, and exercise civil and criminal jurisdiction over the areas that they had acquired. धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये सारी पावर्स मिल जाती है। एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी मतलब किसी भी जगह पे, टेरिटरी पे अपना कब्जा कायम करने का राइट मिल जाता है। राइट टू मिंट मनी, मिंट मनी का क्या मतलब होता है, जैसे कॉइन्स बनाने का अधिकार इनको मिल जाता है। ठीक है, नोट छापने का अधिकार इनको मिल जाता है। इसके अलावा राइट टू कमांड फोर्ट्रेसेस एंड ट्रूप्स, यानी कि फोर्ट्रेसेस, किलों के ऊपर या जो ट्रूप्स, जो उनकी सेना है, उनको कमांड करने का राइट मिल जाता है। डिक्लेयर वॉर एंड पीस, कभी भी वो जो है वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं या कभी भी पीस डिक्लेयर कर सकते थे। एक्सरसाइज सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर एरियाज एक्वायर, जो भी जगह, जो भी एरिया इन्होंने एक्वायर करे हैं, कब्जे में लिए हैं अपने, उस एरिया का जो है
क्रिमिनल या सिविल जुरिस्डिक्शन ये लोग खुद देखते थे, यानी कि वहाँ पे कोई भी क्राइम करेगा तो उसको पनिश करने का राइट इन्होंने खुद को दे दिया था। ठीक है, तो ये सारे राइट्स धीरे धीरे इनको मिल जाते हैं। As trade expanded, the company, under the leadership of Major General Robert Clive, persuaded merchants and traders to settle near the factory. धीरे धीरे जो जनरल By क्लाइव होता है ये क्या कहता 1696, है? it began building a fort around the settlement in Calcutta. This was called Fort William. Did you know that in 1639, a local ruler gave Madras to the British? It was therefore made into a trading settlement named Fort St. George. देखो, फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या था पहले? एक जो है मद्रास था, चेन्नई था मतलब, और उसको सेल कर दिया था वहाँ के लोकल नवाब ने, किसको? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, और फिर उसको In गोडाउन या इस तरीके की फैक्ट्रीज में कन्वर्ट कर 1668, दिया। King Charles II gave the island of Bombay to the company at a nominal rent of £10 per year. ठीक है, एक रेंट पे जो है बॉम्बे का जो आइलैंड था, वो आइलैंड क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि चारों तरफ उसके जो है पानी था, समुद्र था, तो इन्होंने क्या करा, किंग चार्ल्स सेकंड ने एक नॉमिनल से रेंट पे, छोटे से अमाउंट के पे किराए पे दे दिया, किसको? ब्रिटिशर्स को। The fortification developed here was named Bombay Castle. And soon Calcutta too was under the company. Thus, the headquarters of the company was Madras in the southern region, Bombay in the western region, and Calcutta in the eastern region. इन सारी जगहों पे इन्होंने जो अपने अपने हेडक्वार्टर्स बना लिए, तीनों जगहों पे ब्रिटिशर्स ने। The next step in the company's expansion pattern in Bengal was to request the Mughal emperor for trade concessions. बाद में इन्होंने क्या करा, मुगल एम्परर से ट्रेड कंसेशंस मांगना शुरू कर दी, यानी कि व्यापार करने के लिए कुछ नियमों में इनको कंसेशन दी जाए, ठीक है, या फिर टैक्स में इनको कंसेशन दी जाए। ये सारे रिक्वेस्ट ये लोग जो है मुगल एम्परर से करने How लगे। did Clive do this? In 1698, company officials bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. ठीक है, क्या करा इन्होंने? ब्राइब करना शुरू किया, जो लोकल अथॉरिटीज थी या लोकल जो रूलर्स थे, उनको ब्राइब करके जो है ये जमींदारी राइट्स खरीद लेते थे। One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta, or Kolkata as it is known today. The company also persuaded the Mughal emperor Aurangzeb to issue a farman or royal edict granting it the right to trade duty-free in Bengal. देखो, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट इनको कैसे मिला? देखो, ड्यूटी फ्री क्या होता है कि किसी भी तरीके का टैक्स इनको पे नहीं करना पड़ेगा, बंगाल में रह के ये फ्री ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई टैक्स पे किए। What this meant was that the company could export and import goods from and to Bengal without paying any taxes to the government. This caused immense revenue loss for the Nawab of Bengal. लेकिन इससे क्या हुआ? बंगाल के जो नवाब थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि टैक्स से क्या होता है, जो ये नवाब होते हैं, मतलब जो भी रूलर होता है लोकल, उसकी इनकम होती है, और वो इनकम ही उसको नहीं मिलेगी तो क्या होगा? उसको लॉसेज होंगे। तो जब ये लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, इस तरीके के कंसेशंस मिल जाते हैं इनको, तो ये क्या करते हैं, जो नवाब होता है बंगाल का, वो काफ़ी जो है अग्रेसिव हो जाता है कि इस तरीके से तो जो हमारे रेवेन्यूज है वो कम होते जाएंगे, और उसके बाद जो है क्या होता है, वॉर होती है प्लासी की। To make matters worse, officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay taxes. This they refused to do, causing further loss of revenue for the Nawab of Bengal. Secondly, company officials were given the right to issue passes known as dastaks for the free movement of goods. दस्तक क्या होते हैं? देखो, एक तरीके के पास होते हैं, पासेस होते हैं, जिससे गुड्स की फ्री मूवमेंट हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह।
They misused these passes by sometimes selling them to friendly traders. How do you think the Nawab reacted to this? कैसे रिएक्ट करता है ये नवाब जो होता है बंगाल का? Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb in 1717, the British East India Company purchased from the Mughal Emperor Farrukh Shah duty-free trading rights in all of Bengal for a mere 3,000 rupees a year. 3,000 रुपए साल के, यानी कि साल में 3,000 रुपए देंगे और सारे जो ट्रेडिंग राइट होते हैं ड्यूटी फ्री, मतलब बिना कोई टैक्स पे किए, ऐसे राइट्स ये बंगाल के लिए खरीद लेते हैं। पूरे बंगाल में अब ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। Annoyed successive Nawabs of Bengal, Murshid Quli Khan, followed by Ali Vardi Khan, and then Siraj-ud-Dawla, protested. All of them were strong rulers who wanted to undermine the hold that the company was trying to gain over trade in that region. How do you think the Nawabs curbed the British? The Nawabs claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue by refusing to pay taxes. Accordingly, they refused to grant the company any trade concessions. अब क्या होता है, बंगाल के जो नवाब होते हैं, अलग अलग जो नवाब होते हैं, ये किसी भी तरीके का कंसेशन देने से ब्रिटिशर्स को मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लॉसेस हो रहे थे। अगर वो टैक्स पे नहीं करते थे तो इनको अपने टेरिटरी के लिए लॉसेस होते थे। तो फाइनली ये क्या डिसाइड करते हैं, हम किसी भी तरीके का कोई ग्रांट कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देंगे। Instead, they demanded large tributes in exchange for the company's right to trade. The Nawabs also objected to the fact that the British officials did not accord them the respect that was their due. The Nawabs accused the company of writing disrespectful letters and humiliating them. It was hardly surprising then that the Nawabs set out to undermine the authority of the company by stopping it from minting coins. इसके बाद जो बंगाल के नवाब होते हैं, जिनको और ज़्यादा कॉइन मिंट करने के लिए, यानी कि और ज़्यादा कॉइन ये नहीं बना सकते हैं, ठीक है, या अपने फोर्टिफिकेशन का उनका जो भी एरिया है उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ये सब रिस्ट्रिक्शंस ये लोग कंपनी के ऊपर लगा देते हैं। Its fortifications. How do you think the company officials reacted to these measures taken by the Nawabs? अब ब्रिटिशर्स कैसे रिएक्ट करते हैं? ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? The company, on its part, declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trading prospects of the company, and trade could flourish only if duties were removed. It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its forts. The conflicts between the British and the Indian Nawabs culminated into a series of battles until the British were finally successful in establishing their rule in Bengal by the mid-18th century. ठीक है, तो दोनों ही पार्टीज में जब इस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्या होता है, एक सीरीज ऑफ वॉर होती है, यानी कि बहुत सारी लड़ाइयाँ ये लड़ते हैं लोकल रूलर्स के साथ ब्रिटिशर्स, और धीरे धीरे फिर जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वो शुरू होता है। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल तो लेटर ऑन शुरू होता है। अभी तो क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो है वॉर डिक्लेयर करते हैं, अटैक करते हैं लोकल रूलर्स पे और उनके टेरिटरी को अपने टेरिटरी में मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के आएंगे, इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।